हेलो गाइस, वेलकम टू मोटोबीम। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स के बारे में। फ्रॉम द KTM 390 एडवेंचर टू द एक्टिवा इलेक्ट्रिक, वी आर गोना टॉक अबाउट ऑल द मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स पॉसिबल कमिंग वेरी वेरी सून। सो स्टिक अराउंड। क्या पता आपको आपकी फेवरेट मोटरसाइकिल या स्कूटर जो चाहिए वो आ रही हो। नंबर वन, मैंने KTM का नाम तो ले लिया, तो KTM की 390 एडवेंचर द न्यू जनरेशन इज कमिंग टू इंडिया very soon, probably by this Diwali it will be here and you will get to see a very nice update to it. Yes, the design has a little bit difference because the face is now changed. उतना बड़ा face नहीं है उसको, small projector headlight का setup, LED DRLs, everything is nice. But this motorcycle will be a little longer, little bit taller, and there will be two variants to it. There will be the standard adventure, which will have the similar chassis from the Duke, but it will be elongated, little bit bigger. Then it will have the same engine from the Duke, which is 399cc, producing 45 bhp, and it will have a larger fuel tank also. So yes, it will be more fun to go touring. But then there will be an enduro version of the motorcycle also coming. This enduro version will have a lot more things going around, like off-road tires, spoke wheels. It will be a lighter motorcycle, longer mudguard and everything. So it will be more fun of a motorcycle. So if you want to go jumping around places, the 390 enduro is also coming to India very soon. The next motorcycle is a touring motorcycle. You can say it will be the Xpulse 440 or the Karizma 440 from Hero. करिश्मा का नेम टैग, क्योंकि अभी रिसेंट अपडेट के साथ करिश्मा इज समथिंग दैट पीपल आर नॉट लाइकिंग एज मच, बट देन अगेन द करिश्मा इज कमिंग बैक विद अ 440 और द एक्सपल्स, विच एवर टैग हीरो लाइक्स इट, कि इसको टूरिंग बाइक बनाना है या एडवेंचर बाइक बनाना है। यू नेवर नो, वी कैन गेट बोथ मोटरसाइकिल्स एक्चुअली। इन द करंट टेस्टिंग सीन दैट वी हैव सीन इन लद्दाख, दिस लुक्स लाइक एन एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल। तो करिश्मा एक्सपल्स दोनों का टैग लग सकता है एंड इट विल बी अ परफेक्ट कॉम्पिटिटर फॉर द न्यू KTM 390 एडवेंचर। एंड येस, Xpulse is something that's proven itself कि वो कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है. So this Xpulse 440 or the Karizma 440 will be a very good upgrade for you guys who are looking for a touring motorcycle, for a tall adventure motorcycle and a comfortable motorcycle in a whole complete package. It can be your daily bike too. Daily bike की बात करेंगे तो daily में स्कूटर तो चाहिए ना, तो Activa Electric is also coming very soon. Honda is getting the first electric scooter and it will be nothing else but the Activa because that is the name that is sold. क्वालिटी में अभी जो पेट्रोल स्कूटर है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्वांटिटी में बिक रहा है एंड सेम इज गोना बी द आइडिया फॉर द एक्टिवा इलेक्ट्रिक। क्वांटिटी में सेल करना है, बेसिक रेंज आपको 80 to 100 किलोमीटर्स ऑन अ फुल चार्ज मिल जाएगा विद डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज। सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्टिवा इलेक्ट्रिक अपकमिंग. It will look like the current generation Activa with a little bit design change here and there, but yes, Activa Electric is coming for sure. While we have also seen the spy shots for the Bergman Electric from Suzuki, Bergman Electric will also be coming. लेकिन क्योंकि मेजर जायंट्स जो है, जैसे होंडा ने कुछ नहीं लाया है, जैसे सुजुकी भी कुछ नहीं लेके आ रहा है, बर्गमैन इलेक्ट्रिक इज ऑन टेस्ट एंड विल कम प्रीटी सून. बट देन अगेन, until and unless someone steps up the game and brings an electric scooter, like TVS is already done with the iQube, Bajaj already has the Chetak. जो जापानीज ब्रांड्स है उनको थोड़ा सा झिझक हो रहा है, बट होंडा सुजुकी दे विल डेफिनेटली गेट समथिंग वेरी सून बिकॉज EV इज समथिंग दैट्स हैज अ ग्रोइंग डिमांड. अर्लियर जो सर्च था उतना ज़्यादा नहीं है, बट डिसेंट डिमांड अभी भी चल रहा है. सो स्कूटर इन इलेक्ट्रिक फॉर्मेट इज डेफिनेटली अ वे टू गो. बट देन अगेन, स्कूटर को बजट में रख के बजट बाइक चाहिए आपको, तो स्पोर्टीएस्ट लुकिंग to compete with the new Hero Xtreme 125 and the Raider 125, there is going to be the Bajaj Pulsar N125. Bajaj Pulsar N125 काफ़ी सारे spy shots आ चुके हैं. You can look at the motorcycle with turbine flowing type trim design and everything, and ये N का design follow किया जा रहा है with the 125cc engine which Bajaj already has for the Pulsar 125 NS 125. That same engine with a little bit changes here and there will continue in the N125, and we can see a very comfortable but a sporty looking Pulsar coming very soon. The next up is the Triumph Truxton 400. The Speed 400 has already been successful. Scrambler 400 has already been successful. लेकिन इसमें एक थोड़ा sportier variant चाहिए. इसका एक update आने वाला है with a classic design and a cowl and everything that is also coming in with the Truxton 400. Everything else like the fuel tank, the engine, the chassis will be same. Handlebar का position will be a little different. There is a chance that we might get clip-on handlebars and there will be an addition of a cowl also up front. The Truxton 400 is also coming to India very soon. Basically made in India ही है, but to the markets very soon. Adding more to the retro lineup, we have the classic 650 also coming in, and साथ ही साथ Scrambler 650 को भी expect कर सकते हो. We've seen quite a lot of spy shots, and ये Royal Enfield Rider Vinia में कुछ ना कुछ तो 650 में जरूर आने वाला है. It can be the classic, it can be the Scrambler, because the 650cc lineup has had a quite a lot of demand. Interceptor का sales अच्छा है, Continental का sales अच्छा है, Shotgun and Super Meteor का sales भी काफी decent नंबर पे चल रहा है. तो रॉयल एनफील्ड वांट्स टू मिन दिस मार्केट एंड ज़्यादा ऑप्शंस देना है आपको कि आप 350 ओन करते हो, क्यों ना एक 650 भी ले लो क्लासिक फॉर्मेट में. If you want to play around with the motorcycle, there's gonna be a Scrambler version also, which will be very similar to that of the Gorilla.
but then again it will be a proper 650cc parallel twin scrambler which will have a shit ton of torque. Apache RR310 के बेस पे आने वाली या RTR 310 के बेस पे आने एक एडवेंचर मोटरसाइकिल is also coming from TVS, because TVS has now understood that adventure touring motorcycles is something that is a small market but people are preferring it with the sales of the 390 Adventure, because KTM के lineup में 390 Adventure has been selling the maximum यार. Himalayan has also been updated, so TVS को it's now high time to bring the adventure bike based on the 310 or maybe the new engine, but then again इसका full details हमें नहीं पता है. We know one thing for sure, that the adventure bike from TVS is coming soon and it will be competing perfectly with the new 390 Adventure, with the Xpulse 440 or the Charisma 440, with also the Himalayan. तो यहाँ पे भाई मार्केट में मजा तो आने वाला है अभी. This is the end of the video. Right now these are the set of upcoming bikes which are coming for sure. What do you think should be coming, or what are the names of the bikes that you feel that you've seen the spy shots of कि ये आने वाला है and मैंने कुछ मिस कर दिया रहेगा. There is a good chance यार, मैंने इतना बड़ा लिस्ट बनाया लेकिन कुछ ना कुछ तो मिस कर ही सकता हूँ, गलती हो ही सकती है. तो आप बता दो which motorcycle are you expecting to come really soon or you are waiting for. And if you want any kind of feedback from my side, should you wait for this motorcycle, is it actually coming or not, which I've missed from this list, let me know. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next one. Bye bye.